फ्रेंड्स, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज 11 to 13 JPSC का चला रहा हूँ, उसमें साइंस एंड टेक का ये आखिरी सीरीज है और मैं छठा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँगा। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट आर सैटेलाइट्स, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेंशनल नॉट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्राइब देम विद रिलेटिव मेरिट्स। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, a satellite is any object that revolves around a larger celestial body due to gravitational force. While the moon is the natural satellite of the Earth, in modern scientific and technological context, the term primarily refers to artificial satellites that are launched into orbits around the Earth or other planets for diverse purposes. Since the launch of Sputnik first by the Soviet Union in 1957, satellites have become indispensable tools for communication, navigation, scientific exploration, security, and socio-economic development. Types of satellite and their application. Satellites are classified based on their function and purpose. The major types include communication satellite. Purpose: facilitate long-distance communications by relaying signals across vast distances. Application: provide telephone, internet, television, and radio services globally. Enable connectivity in remote and inaccessible areas where terrestrial infrastructure is weak. Support disaster management by ensuring emergency communications when terrestrial system fails. Example: INSET series in India, Intelsat, Inmarsat. Second, weather and meteorological satellites. Purpose: monitor atmospheric conditions, cloud formations, rainfall, and storm development. Application: provide data for weather forecasting, cyclone tracking, monsoon prediction, help in disaster preparedness, and reducing the impact of extreme weather events. Study climate change and long-term atmospheric pattern. Examples: INSET 3D, 3DR in India, US, USA, Meteosat Hero. Third, navigation satellites. Purpose: enable precise location, navigation, and timing services. Application: GPS, Global Positioning System, GLONASS, Russia, Galileo, EU, uh, China, and Navig, India, are used for transport, aviation, shipping, and even daily life applications like mobile apps, maps. Critical in defense and strategy operations by guiding missiles and troops. Useful for tracking vehicles, logistics, and providing real-time directions. Examples: India's Navig system, US GPS satellites. Fourth, Earth observation and remote sensing satellites. Purpose: capture high-resolution images of Earth's surface. Application: monitor agriculture, crop pattern, soil moisture, and irrigation planning. Assist in forest management, wildlife monitoring, and biodiversity conservation. Detect land degradation, deforestation, mining, and urban expansion. Support disaster management through flood mapping, earthquake impact analysis, and drought assessment. Examples: India's Cartosat, Reset, and ResourceSat series, and Landsat USA. Fifth, scientific and research satellites. Purpose: explores space, study cosmic phenomena, and expand scientific knowledge. Application: study solar radiations, cosmic rays, and planetary atmosphere. Explore Mars, Moon, and other celestial bodies. Enhance understanding of astrophysics, space weather, and black holes. Examples: Hubble Space Telescope, ISRO's AstroSat, Chandrayaan, and Mangalyaan missions. 6. Military and strategic satellites. Purpose: enhance national security through surveillance, reconnaissance, and secure communications. Application: spy satellites provide intelligence on enemy troop movement, weapon development, and border monitoring. Used for missile targeting, early warning of enemy launches, and secure defense communication. Example: GSAT-7 for Indian Navy, USA's keyhole satellites. 7. Space exploration satellites. Purpose: sent beyond Earth's orbit to explore other planets, moons, and outer space phenomena. Application: study surface composition, atmosphere of celestial bodies, search for extraterrestrial life and habitability, test future technologies for
interplanetary travel. Examples: Voyager probe, Mars reconnaissance orbiters, uh, India's Chandrayaan 3. Conclusion. The conclusion written in this way: satellites have become indispensable in the modern world, bridging the gap between science and society. They support communication, navigation, defense, agriculture, disaster management, and space exploration. For a country like India, satellites are not just instruments of scientific advancement, but also of socio-economic transformation, national security, and international prestige. With increasing challenges such as climate change, natural disasters, and security threats, the role of satellites will continue to expand, making them vital for sustainable development and मैंने एक इमेज डाला है सैटेलाइट का। आप भी इसमें एक इमेज डालिएगा जिससे आपका आंसर स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा उसमें और नंबर आप ज़्यादा गेन कीजिएगा। हिंदी का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। उपग्रह वे पिंड होते हैं जो किसी बड़े खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं। यहाँ चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। वही आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपग्रह का अर्थ मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह से है, जिन्हें पृथ्वी या अन्य ग्रहों की कक्षा में स्थापित किया जाता है। 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बाद से उपग्रह संचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन, सुरक्षा, वैज्ञानिक अन्वेषण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उपग्रहों के प्रकार और उनके अनुप्रयोग। उपग्रहों को उनके उद्देश्य और कार्य के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उद्देश्य, लंबी दूरी तक संदेश, टीवी, रेडियो तथा इंटरनेट का प्रसारण करना। अनुप्रयोग, वैश्विक स्तर पर टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन और रेडियो सेवा उपलब्ध कराना। दुर्गम क्षेत्रों में भी संचार सुविधाओं पहुंचाना। आपदा प्रबंधन में आपातकालीन संचार की सुविधा देना। उदाहरण, इनसेट श्रृंखला भारत, इंटरसेट, इमारसेट। दूसरा, मौसम विज्ञान उपग्रह, वेदर मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। उद्देश्य, वातावरण, बादल, वर्षा और तूफान की निगरानी। अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात की जानकारी, बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं में पूर्व चेतावनी, जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक मौसम अध्ययन। उदाहरण, इनसेट 3D और 3DR भारत, गोइस अमेरिका, मेट्रोसेट यूरोप। थर्ड, नेविगेशन उपग्रह। उद्देश्य, सटीक स्थान, दिशा और समय संबंधी सेवा देना। अनुप्रयोग, परिवहन, विमानन, नौवहन और मोबाइल ऐप्स में उपयोग। सेना में मिसाइल गाइडेंस और सैनिकों की गतिविधियों में सहायता। वाहनों और माल परिवहन की निगरानी। उदाहरण, भारत की नाविक, अमेरिका की जीपीएस। चौथा, पृथ्वी अवकुलन एवं रिमोट सेंसिंग उपग्रह। उद्देश्य, पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेना। अनुप्रयोग, कृषि, फसल पैटर्न, मिट्टी की नमी और सिंचाई की योजना। वनों और जैव विविधता की निगरानी, शहरीकरण, खनन और वनों की कटाई का पता लगाना। आपदा प्रबंधन, बाढ़ पर भूकंप और सूखा की स्थिति का आकलन। उदाहरण, कार्टोसेट, रिसेट, रिसोर्सेट भारत, लैंडसेट अमेरिका। पांचवा, वैज्ञानिक अनुसंधान उपग्रह। उद्देश्य, अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अध्ययन। अनुप्रयोग, सूर्य की किरणें, ब्रह्मांडीय विकिरण और ग्रहों का अध्ययन। मंगल, चंद्रमा आदि ग्रहों का अनुसंधान पर अनुसंधान। खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष, मौसम और ब्लैक होल पर अध्ययन। उदाहरण, हबल टेलीस्कोप, इसरो का एस्ट्रोसेट, चंद्रयान और मंगलयान। छठा, सैन्य और रणनीतिक उपग्रह। उद्देश्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाना। अनुप्रयोग, दुश्मन की गतिविधियों और सीमाओं की निगरानी, मिसाइल टारगेटिंग और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। सेना के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क। उदाहरण, G-SAT-7 भारतीय नौसेना के लिए, अमेरिका के लिए की होल उपग्रह। सातवां, अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह। उद्देश्य, पृथ्वी के बाहर ग्रहों, चंद्रमा और ब्रह्मांड का अध्ययन। अनुप्रयोग, ग्रहों की सतह और वातावरण का अध्ययन, जीवन की संभावना की खोज, भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा हेतु तकनीकों का परीक्षण। उदाहरण, वोयेजर यान, मार्स रिकॉन्सियंस और ऑर्बिटर, भारत का चंद्रयान 3। निष्कर्ष निष्कर्ष इस मैंने निष्कर्ष इस प्रकार लिखा है। उपग्रह आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक उपकरण बन चुके हैं। ये न केवल संचार, मौसम, नेविगेशन और रक्षा में उपयोगी हैं, बल्कि कृषि, आपदा प्रबंधन, जलवायु अध्ययन और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देश के लिए उपग्रह वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के साधन हैं। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए
उपग्रहों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। अथवा में एक क्वेश्चन और था, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, और इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्क्राइब करना था। तो मैंने इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार तैयार किया है। Energy is the driving force of economic growth and social development. It is essential for industries, agriculture, transport, communication, and daily human activities. Broadly, energy sources can be categorized into conventional sources and non-conventional sources based on their ability, usage, and sustainability. First, conventional source of energy. Conventional energy sources are the traditional forms of energy that have been in use for a long time. They include coal, petroleum, natural gas, and large hydroelectric power. These are often non-renewable, derived from fossil fuels, and are exhaustible in nature. First, coal. Coal has historically been the backbone of industrial development. It is used for electricity generation, steel production, and as a raw material in many industries. Merits. Abundant reserve in countries like India and China, reliable and established technology for extraction and use, provides large-scale employment. Demerits: high pollution level due to carbon emissions, sulfur dioxide, and ash. Non-renewable, leading to gradual depletion. Mining causes land degradation and health hazard for workers. B. Petroleum natural gas. These are the most versatile source, powering transport, industries, and households. Merits: high calorific value, easy to transport through pipelines and tankers, cleaner than coal in case of natural gas. Limits: reserves are limited and unevenly distributed globally. Price volatility in international markets, responsible for greenhouse gas emission and oil spills. C. Hydroelectricity large dams, generated by using the potential energy of stored water. Merits: renewable and eco-friendly compared to fossil fuels, provides irrigation, flood control, and fishing opportunities. Low operating cost once established. Demerits: displacement of people due to large dam projects, submergence of forest and biodiversity loss, a risk of earthquake and silting problems. Second, non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy or renewable source of energy are modern form of energy which are inexhaustible in nature. These include solar and biomass, tidal, geothermal, and small hydropower. They are eco-friendly and sustainable alternative to conventional fuels. First, solar energy. Energy harnessed from suns using photovoltaic cells and solar thermal system merits. Inexhaustible and available everywhere. Zero pollution during operation. Suitable for decentralized rural electrification. Demerits: high initial installation cost. Intermittent supply, dependent on weather and daylight, requires large land area for solar farms. B. Wind energy, generated by using wind turbines, makes clean and renewable, ideal for coastal and desert areas, provides employment and rural development opportunities. Demerits: unpredictable and site-specific, visual and noise pollution, impact on migratory birds. C. Biomass energy, produced by burning organic matters such as agricultural waste, animal dung, and biofuels. Merits: utilizes agricultural residue and reduce waste, carbon neutral if managed sustainably, provides energy security to rural areas. Demerits: inefficient combustion may lead to indoor air pollution, overuse may cause deforestation, lower energy density compared to fossil fuels. D. Tidal wave energy harnesses ocean tides and waves, meets immense potential along long coastlines, predictable and inexhaustible. Limits: high cost of technology and maintenance, limited suitable sites, may affect marine ecosystem. Geothermal energy uses heat stored beneath the Earth's surface, meets reliable and continuous supply, environmentally friendly. Limits: location specific, feasible only in volcanic or tectonic areas, high drilling and exploration cost. Comparative analysis: availability. Conventional sources are limited and exhaustible, while non-conventional are renewable and inexhaustible. Environmental impact:
Conventional sources cause high pollution and climate change, while non-conventional are clean and sustainable. Economic aspects. Conventional energy requires low initial investment but faces depletion and import dependency. Non-conventional requires high investment but ensure long-term energy security. The conclusion written in this way, uh, the rising energy demand coupled with climate change challenges make it essential to shift from conventional to non-conventional energy. While conventional sources remain dominant due to established infrastructure, the future lies in renewable like solar, wind, and biomass. A balanced approach involving energy efficiency, technological innovations, and government policies will ensure sustainable energy security for India and the world. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार तैयार किया गया है। ऊर्जा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास की मुख्य धुरी है। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार तथा दैनिक जीवन की सभी गतिविधियां ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऊर्जा स्रोतों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है: पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग मानव ने लंबे समय से किया। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बड़े बांधों से उत्पन्न जल विद्युत प्रमुख है। ये प्राय अच्छे नहीं होते और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कोयला कोयला और औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। लाभ: भारत और चीन जैसे देशों में प्रचुर भंडार, तकनीकी विकसित और विश्वसनीय, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध। हानि: अत्यधिक प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, राख, सल्फर डाइऑक्साइड, सीमित और शीघ्र समाप्त होने वाला, खनन से भूमि क्षरण और श्रमिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। बी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन, उद्योग और घरेलू उपयोग का प्रमुख स्रोत। लाभ: उच्च ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू, आसानी से परिवहन योग्य। प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन। हानि: सीमित भंडार, असामान्य वितरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य अस्थिरता, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और तेल रिसाव की समस्या। सी. जल विद्युत, बड़े बांध, बांधों में जल संग्रह कर बिजली उत्पन्न करना। लाभ: अच्छे एवं स्वच्छ। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन में सहायक, एक बार निर्माण होने के बाद संचालन लागत कम। हानि: विस्थापन और सामाजिक समस्या, वनों का जलमग्न होना और जैव विविधता पर प्रभाव, सिल्ट जमाव और भूकंपीय जोखिम। दूसरा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अपारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जो अच्छे, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ होते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वार भाटा, भूतापीय और लघु जल विद्युत शामिल हैं। ए. सौर ऊर्जा सौर कोशिकाओं और सौर ताप प्रणालियों द्वारा प्राप्त ऊर्जा। लाभ: असीमित और सर्वत्र उपलब्ध, प्रदूषण रहित, ग्रामीण विद्युतीकरण में उपयोगी। हानि: प्रारंभिक लागत अधिक, मौसम एवं दिन रात पर निर्भरता, बड़े सौर पार्क हेतु भूमि की आवश्यकता। बी. पवन ऊर्जा पवन टरबाइन से बिजली उत्पादन। लाभ: स्वच्छ और नवीकरणीय, तटीय एवं स्थलीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। हानि: अनिश्चित और स्थान विशेष पर निर्भर, ध्वनि एवं दृश्य प्रदूषण, प्रवासी पक्षियों पर दुष्प्रभाव। सी. बायोमास ऊर्जा कृषि अपशिष्ट, गोबर और जैव ईंधनों से ऊर्जा। लाभ: कृषि अवशेषों का उपयोग, कार्बन न्यूट्रल यदि सतत रूप से प्रबंधित हो, ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा। हानि: अक्षम दहन से घरेलू प्रदूषण, वनों की कटाई का खतरा, ऊर्जा घनत्व कम। डी. ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा समुद्र की ज्वार भाटा और तरंगों से ऊर्जा। लाभ: असीमित और पूर्वानुमित, लंबी तटीय रेखा वाले देशों के लिए संभावनाएं। हानि: तकनीकी महंगी और रखरखाव कठिन, सीमित उपयुक्त स्थल, समुद्री पारिस्थितिकी पर असर। ई. भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर संग्रहित उष्मा से ऊर्जा। लाभ: सतत और भरोसेमंद, पर्यावरण के लिए अनुकूल। हानि: ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्रों तक सीमित, खोज एवं ड्रिलिंग महंगी। तुलनात्मक दृष्टि दोनों का तुलनात्मक दृष्टि इस प्रकार है: उपलब्धता, पारंपरिक स्रोत सीमित, अपारंपरिक असीमित। पर्यावरण प्रभाव, पारंपरिक से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, अपारंपरिक अधिक स्वच्छ। आर्थिक पहलू, पारंपरिक की लागत प्रारंभ में कम परंतु आयात निर्भरता और क्षय की समस्या, अपारंपरिक में निवेश अधिक पर दीर्घकालीन सुरक्षा। निष्कर्ष इस पर लिखा गया:
ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए पारंपरिक से अपारंपरिक ऊर्जा की ओर स्थानांतरण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में पारंपरिक ऊर्जा का वर्चस्व है, परंतु भविष्य सौर, पवन और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का है। संतुलित नीति, तकनीकी नवाचार और ऊर्जा दक्षता अपनाकर ही भारत व विश्व सतत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आगे भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा। आपने कमेंट जरूर करें और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करें और सभी को धन्यवाद।